So let's begin with this topic. The model number one was water supply and distribution of water. In the same way, in the same content, we are moving on, and we'll take today the type of intake structures. Okay, we'll learn about the intake structures. So what exactly is an intake structure? मतलब होता क्या है? Now, हमारे घरों तक के in our homes, waters are delivering by the municipal corporations after treating of whatever the source. Source may be a river, source may be a lake, source may be a pond, or any reservoir. Source may be anything, but it is treated and coming to our homes. But when it comes to your treatment plant, so water is coming from the intake from then the water is taken out from this intake structures which is located in your source level. Okay, जो भी आपका सोर्स है वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है. वो स्ट्रक्चर को हम इंटेक स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से उस पर्टिकुलर जगह से उस पर्टिकुलर सोर्स से हम वहां से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां से हम वाटर को ले रहे हैं. दैट्स वाई वो उसको हम कहते हैं इनटेक. वहां से हमारा वाटर का इनटेक हो रहा है. दैट्स वाई वी आर सेइंग इट एज अ इनटेक स्ट्रक्चर. नाउ इनटेक स्ट्रक्चर कैन बी मेड ऑफ एनी मटेरियल. Mostly it is happening and it is made up of concrete structure only. In older days ये कुछ आपका टिम्बर का हुआ करता था, कभी कौन मतलब पेबल्स का स्टोन्स का बनता था. ओके, बट nowadays whenever it is constructed and it is made up of a concrete only. So we'll go further. The intake structure are used for collecting water from the surface source such as river, lake and reservoir and conveying it further to the to the water treatment plant. Okay, these structures are a masonry or a concrete structures and provide a relatively clean water free of pollution, sand and objectionable floating material. Okay, because it is क्योंकि आपका जो इंटेक स्ट्रक्चर है वहीं पे आपका फर्स्ट लेवल में आपका स्क्रीनिंग वगैरह के थ्रू आपके जितने फ्लोटिंग मटेरियल से आपके जो भी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, मेजर पोल्यूटेंट हो सकते हैं, तो उसको हम लोग रिमूव करने की कोशिश वहीं करते हैं बाय प्रोवाइडिंग स्क्रीन्स एंड ऑल्स. ओके, नाउ before proceeding to intake structure, we like to see what is the suitable site selection for intake structure. आपका intake structure कहाँ locate होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका proper site क्या होना चाहिए, that we'll see in this topic. So the site should be so selected that it may admit water even under worst condition. पानी का लेवल अगर बहुत नीचे लेवल में भी आ गया तो भी आपके उस वर्स्ट कंडीशन में हमें पानी सफिशिएंट अमाउंट में मिलते रहना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, पार्शियल वाटर, पार्शियल एयर विच कैन डैमेज योर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, सो सफिशिएंट अमाउंट में आपको वाटर हमेशा प्रोवाइड होते रहना चाहिए. ओके, जनरली इट इज प्रीफर्ड दैट इनटेक शुड बी सफिशिएंट बिलो द शोर लाइन. हमेशा हम यही प्रीफर करते हैं कि आपका जो भी शोर लाइन होगा उसके नीचे में ही आपका इंटेक का पॉइंट होना चाहिए. ओके, साइट शुड बी वेरी क्लोज टू अ ट्रीटमेंट प्लांट एज पॉसिबल. हमेशा आपका जो साइट है वो बहुत क्लोज होना चाहिए बोलते हैं आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से. बिकॉज ग्रेविटी अगर यूज होता है तो अच्छी बात है, बट बेसिकली यहाँ क्या होता है कि वाटर को आपके इंटेक स्ट्रक्चर से आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लाने के लिए पंप्स का यूज करेंगे. अगर हमारा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो आपको ज्यादा हाउस पावर का पंप लगेगा. अगर ज्यादा हाउस पावर का पंप लगेगा इट मींस दैट कि आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, पावर कंज्यूम कर रहे हो. सो इट इज एडवाइजेबल दैट योर intake structure is as close as to water treatment plant. Okay, it should be so located that it is free from the pollution. आपको इंटेक स्ट्रक्चर ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसे मतलब उसका जो लोकेशन है ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए कि वहां पे पोल्यूशन जो है वैक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम पोल्यूशंस. It is better to provide an intake at upper stream of a city so that water is not contaminated. हमको कोशिश यही करना चाहिए कि आपका ये अपर सिटी के अपर स्ट्रीम के साइड में आना चाहिए. It should not interfere with the river traffic if any.
इंटेक स्ट्रक्चर कहीं पे हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिए जहाँ पे आपका बोट चल रहा होगा या कुछ और एक्टिविटी हो रही होगी जहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता होगा। सो ऐसे एरिया में हमेशा इसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे एरिया में आपका इंटेक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड बी लोकेटेड वेयर ग्राउंड फाउंडेशन कंडीशन आर अवेलेबल। आपको ऐसी जगह देखना चाहिए जहाँ पे सॉरी रॉन्ग बोलता हूँ, आई एम सो सॉरी। इट शुड बी लोकेटेड वेयर अ गुड फाउंडेशन कंडीशंस आर अवेलेबल। आपको ये ऐसी जगह पे आपका इंटेक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जहाँ पे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। मोस्टली व्हाट इज हैपनिंग कि हम इंटेक स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं तो ये आपका वाटर में होता है, और वाटर के नीचे का जो सरफेस रहेगा देयर इज अ हाई चांस ड्यू टू परकोलेशन एंड सीपेज जो वहाँ की जो सॉइल की स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी। सो आप ऐसी जगह पे अगर फाउंडेशन आप प्रोवाइड करोगे तो देयर मे बी हाई चांस ऑफ फेलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। सो यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट द गुड फाउंडेशन कंडीशंस should be available where you are constructing your intake structure. Okay, it should be so located that it admits a relatively pure water free from mud, sand and pollutants. आपका इंटेक स्ट्रक्चर का जो इनलेट का जो माउथ है वो मतलब सरफेस से इतना सफिशिएंट दूर होना चाहिए या इतना अच्छी पोजीशन में होना चाहिए कि वहां से आपका जो मडी है वो नहीं आना चाहिए, आपके सैंड नहीं आना चाहिए, और आपके जो पोल्यूटेंट्स है वो भी नहीं आना चाहिए। इट मीन इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ रैपिड करेंट्स, यानी कि मतलब ऐसा है कि कोई भी अगर आपका वाटर के अंदर में अगर कुछ मेजर हैवी पार्टिकल्स होगा जिससे आपके वाटर ट्रीटमेंट में आके जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है या कुछ चीजों को डैमेज कर सकता है या आपके इंटेक स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। तो हमें ऐसे एरिया को, हमारे ऐसे लोकेशंस को हमें क्या करना है, अवॉइड करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर वेव्स बहुत ज्यादा आ रही है वहां पे तो ऐसी जगह पे आप बनाएंगे नहीं। ऐसे में क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने के चांसेस है। ओके, सो type of intake structure. So basically intake structure are classified in three categories. So the first category is as according to the position. Next is category 2 according to a water level, and number 3 category 3 according to types of sources. So if we talk about this category 1 according to position, so will further it is classified in two ways. Number one is submerged intake, another one is exposed intake. I repeat, submerged intake as well as exposed intake. If we talk about category 2 according to water, so this will be a wet intake and dry intake based on the water level, wet intake and dry intake. Now as far as category 3 according to type of sources, so these are the sources of water like a river source, lake source, reservoir source and canal sources. So जहाँ पे भी आपका जिस सोर्स में आपका इंटेक स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो उसको उसके नाम से ही रख दिया गया है, लाइक रिवर इंटेक, लेक इंटेक, रिजर्वायर इंटेक, कैनाल इंटेक. Somehow somewhere this lake intake is correlated with this exposed intake. ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हो जाते हैं, या ये कही है कि अगर आपका लेक इंटेक है तो उसको हम एक्सपोज इंटेक बोल सकते हैं. Okay, river intake can be further classified in two ways, like twin well type or a single well type. We can classify in these two ways. Okay, now we'll see one by one what is there in each category. Okay, let us talk about this submerged intake structure. As name indicates, submerged मतलब क्या होगा कि ये water level के नीचे ही रहेगा. Okay, यानी इसका foundation भी नीचे रहेगा. Everything maximum portion will be under submerged condition. Okay, submerged intake structure consists of a simple concrete block or a rock filled timber crib supporting the starting end of the withdrawal pipe. Okay, the withdrawal pipe are generally taken up to the sump well at a shore from where the water is lifted by a pump. The intake opening is generally covered by a screen so as to prevent the entry of debris, ice, etc. In case of a lake where silt tend to settle down, the intake opening is generally kept about 2 to 2.5 meter above the bottom of the lake, and thus to avoid the entry of the silt and sediment. Such intake structure should be placed in a stream or intake
at a place where they may not get buried under the sediment and where there are deep water. These are widely used intake for a small water supply projects, drawing water from a stream and lake, having relatively little changes in water surface elevation throughout the year. If you see this diagram properly, so here you can see there are two diagrams. One is a simple concrete block and another is rock fill timber. But you can see the major portion of the intake structure is submerged in both the condition. See, this is the intake structure which is submerged under the water. This is your water level. The same is happening here also in rockfill timber crib. You can see this is a water table. Below that your structure is made. Now ये जो difference है नाम में भी difference है simple concrete block and rockfill timber crib. कहाँ से ये difference आ रहा है? Difference is just coming on this only. आपका जो डिफरेंस है देखिए आपका इतने ही पोर्शन में ये आपको डिफरेंस दिखेगा. You can see this is your concrete block. You can see this is your concrete block. Okay. Now if you in this rockfill timber crib, you can see this is timber. ये आपका timber है. This is your timber and which is filled with your this stones. Okay, filled with your rocks. Now above this concrete block you can see it is a steel bar screen. ये आपका एक बार स्क्रीन है. बार स्क्रीन में भी दिया हुआ डायमेंशन will be like 12 mm by 50 mm dia. Okay, then steel bars यूज किया गया at the rate 15 centimeters. It is cross section आपका sorry center to center. आपका जो ईच एंड स्टील बार है स्पेसिंग इसको ये अगर ये एक बार है ये दूसरा बार है तो इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगा दैट इज 15 सेंटीमीटर उसका स्पेसिंग डिस्टेंस है. ओके सो दिस मच डिटेल्स आर प्रोवाइडिंग हियर. नाउ दिस इज द इंक्लाइन ऑफ अ स्ट्रीम कैनल. आपका जो भी स्ट्रीम कैनल है ये उसका इंक्लिनेशन है. उसके बाद स्ट्रीम का इंक्लिनेशन कहने का मतलब है कि आपका जो स्पिलवे होगा उसकी बात कर रहे हैं. Now low lift pump installed at a level above the HFL. HFL यानी कि होता है आपका हाई फ्लड लेवल ऑफ द स्ट्रीम और द लेक. ओके, पंप प्रोवाइड किया गया है. कहाँ प्रोवाइड किया है? काफी हाइट में प्रोवाइड किया है. आपका फ्लड लेवल के ऊपर में ही किया गया है. तो कहाँ जाएगा इसका डायरेक्शन देखिए. दिस विल बी pumped out from here and then this will be go through the treatment plant. Okay, so again you can see this is your suction pipe. This is your suction pipe. जैसे ही आपका pump start होगा it will be start suctioning the water. Again jack well or a sump well. आपका देखिए ये jack well बनाया हुआ है. Okay, what is happening? The water is coming here and it is stored here. अब आप देखिए वो वाटर लेवल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये जो लेवल है ये ऊपर में नहीं आएगा, ये सेम रहेगा. ऐसा नहीं कि बस यहाँ से ओपन है तो ये बस आपका पानी ऊपर ही ऊपर चढ़ते आएगा. नो, इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट बिकॉज क्योंकि ये वाटर का प्रॉपर्टी है वो आपका एक ही लेवल में रहता है. चाहे कि आप उसको कनेक्टिविटी रहे तो अलग अलग कंपार्टमेंट में रखोगे तो भी वो वाटर लेवल आपका एक ही रहेगा. ओके, सो दिस इज योर सम्प वेल और यू कैन से जैक वेल. ओके, somewhere at or near the shore line. आपके shore line के नीचे ही रहेगा. Okay, so this is the withdrawal content. So similarly this is the simple concrete block. Changes यहीं पे है, बाकी everything is same. जैसे यहाँ लेफ्ट में दिया है आपका concrete block में, वैसे ही आपका timber में भी दिया हुआ है. The same phenomena, same functioning. अब यहाँ पे थोड़ा सा बार स्क्रीन दिया हुआ है. बार स्क्रीन you can give by your own. यहाँ पे डायमेंशन प्रोवाइड किया है, यहाँ डायमेंशन नहीं दिया है. ओके, सो दिस इज द ओल्ड वन. ये ओल्ड तरीका है. नाउ दिस टिम्बर इज व्हाई वी हैव नॉट प्रेफर्ड एंड व्हाई वी हैव केम टू दिस कंक्रीट ब्लॉक बिकॉज ये जो आपका टिम्बर है हो सकता है कि कुछ सालों बाद ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, डिकेइंग होने उसका स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस में अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्ट्रक्चर. So that's why nowadays this timber is removed. So function is same.
as we have seen in simple concrete block. Okay. Now next is the exposed intake structure. Now in this exposed intake structure is in the form of a well or a tower constructed near the bank or river, or in some cases even away from the bank of river. Okay. Mostly हम कोशिश करते हैं कि आपका ये कहाँ बनेगा, बैंक ऑफ रिवर, or in some case even away from the bank of river. They are more common due to ease in operation. ये थोड़ा सा बनाने के लिए भी इजी होता है क्योंकि ये आपके सरफेस के काफी ऊपर में रहेगा, सो इट इज क्वाइट इजी टू कंस्ट्रक्ट. ओके. आप देखो पहले का जो था स्ट्रक्चर वो मोस्टली आपका वाटर के नीचे था. नाउ दिस इज अबव द सरफेस. हेलो, यस सर. Sir, just I'm in the class. I will be mentor in 30 minutes. Okay. So this is another one based on water level. There are two types, wet and dry. So here we are looking towards the wet intake structure. So again आप देखिए डायग्राम में, तो आपका ये विड्रॉल कंडक्ट है, आपका वाटर आएगा. कंट्रोल मैकेनिज्म एंड सेपरेशन रूम इज आल्सो प्रोवाइडेड ओवर हियर. आप ये देखिए यहाँ पे आपका एक गेट भी दिया गया है. सिलेंडर गेट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर. दिस इज द एंट्री पोर्ट्स इन अ आउटर शेल. This is your entry port in the outer shell. This is a reservoir level. Okay. Again, gate control ports are opening in the shaft. ये shaft open करने के लिए आपका provide किया गया है. अभी अगर आप देखोगे तो inside shaft is provided over here, and this is the outer shell. This is the outer shell. Okay. So this is your wet intake structure. The wet intake is that the wet intake is that type of intake tower in which the water level is practically the same as the level of a source of supply. I repeat, the wet intake is that type of intake tower in which the water level is practically the same as the level of a source of supply. आप देखो उसका source of water supply आपका same है एकदम. It is sometimes known as jackwell and it is mostly used. इसको हम कई बार जैकवेल के नाम से भी इसको यूज करते हैं और मैक्सिमम टाइम पे हम इसको यूज करते हैं. ओके. It consists of a concrete circular shell filled with water up to the reservoir level and has a vertical inside shaft which is connected to a withdrawal pipe. अब देखो ये जो है इसका वाटर लेवल भी inside this as well as inside this you can see the water level is reaching to your reservoir level only. यहाँ पे भी आपका अगर पाइप में भी देखें हम तो भी आप देखिए ये आपके रिजर्वायर लेवल तक अवेलेबल है. ओके. तो in similar manner dry intake structure, if you see, it is quite different, little bit different. It is looking like same but is it little bit different is there. Like अब यहाँ अगर देखोगे तो you will see this one column as well as this is the second column जिसमें आपका ये दो एंट्री पोर्ट्स दिया हुआ है. ये आपका सिलेंडर गेट दिया हुआ है. ओके. सो दिस इज प्रोवाइडेड ओवर हियर. ओके. अगर मैं आपको फिर से अगर वेट कंडीशन में दिखाऊंगा, सो आपने देखा था कि वहां पे ये वॉल दिख रहा था एज वेल एज ये वाला वॉल दिख रहा था, बट नो वेयर यू हैव सीन दिस वॉल. ये वाला वॉल वहां पे अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. अब देखिए यहाँ पे ये वॉल दिखेगा, ये वॉल दिखेगा, बट यहाँ पे वो वॉल आपको दिखेंगे नहीं. आपको यही दो, आपको यहाँ पे ये दो वॉल दिखेंगे. इस दो वॉल में भी आपके दो एंट्री पोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं एज वेल एज इट इज इंस्टॉल्ड विद दिस सिलेंडर गेट. द वाटर लेवल इज सेम. जैसे आपका रिजर्वायर था वहाँ पे भी आपका सेम ये दिया गया है. ओके. द सेम रिजर्वायर लेवल यू कैन सी ओवर हियर. नाउ कंट्रोल रूम इज प्रोवाइडेड. कंट्रोल रूम का मतलब ये है कि यहाँ पे पंप हाउस प्रोवाइड किया है. ये कंट्रोल रूम एंड सेपरेशन रूम बोला गया है. इसका मतलब क्या है? दिस इज योर हियर इट इज अ पंप हाउस इज प्रोवाइडेड. ओके. सो दिस इज योर कंट्रोल रूम. और उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है दैट इज ऑफ अ रूफ ट्रस. The essential difference between a dry intake and a wet intake is that
In a wet intake, the water enters from the entry ports. ये जो वेट इनटेक है, जो वाटर है, वो आपका ये एंट्री पोर्ट से एंटर करने वाला है. ओके, यहाँ से एंटर कर रहा है. दीज आर द पोर्ट्स. ये बीच में ये गैप्स दिए गए हैं वॉल्स में, जहां से वाटर आपका एंटर करेगा. ओके, entry port is into the intake and then it enters into the conduit pipe. उसके बाद में जैसे आपको वाटर यहाँ एंटर किया, उसके बाद में आप देखिए आपका जो वाटर है वो यहाँ से एंटर कर रहा है. ओके, ये वाटर पहले आपको रिजर्वायर का पानी जो है, रिजर्वायर का जो वाटर है वो आपके ये दो पोर्ट से, ये दो होल से अंदर में आ गया इस चैम्बर के अंदर में. नाउ फ्रॉम दिस चैम्बर इट इज गोइंग टू योर कंडक्ट पाइप from this. Okay, from this two port you can see this water is going to this conduit pipe. Okay, through a separate gate control opening where in a dry intake water is directly drawn into the withdrawal pipe. जबकि ड्राई कंडीशन में क्या हो रहा है, ड्राई कंडीशन में ये वॉल दिया नहीं है, तो पहले जो एंट्री पोर्ट हो रहा था वो नहीं हो रहा है डायरेक्टली. वो जो अलग से आपके चैम्बर में वाटर आ रहा था वो नहीं हो रहा है डायरेक्टली. क्या हो रहा है, आपका जो कंडक्ट है, विड्रॉल कंडक्ट है, यहीं पे आपका वाटर सीधा एंटर कर जा रहा है. अगर ये वाटर को आपको ऑपरेट करना है, इफ यू वांट टू स्टॉप टू वाटर एंटरिंग इन दिस, देन यू कैन यूज दिस सिलेंडर गेट्स. ओके, डायरेक्टली रिजर्वायर का पानी ये कंडक्ट में आ जा रहा है. दिस इज हैपनिंग इन द ड्राई इनटेक स्ट्रक्चर. A dry intake will therefore have no water inside the intake. I repeat, a dry intake will therefore have no water inside the intake if its gates are closed. अगर ये गेट हमने क्लोज कर दिए तो आपका वाटर एंटर नहीं कर सकता है. I repeat, अगर ये आपने गेट्स क्लोज कर दिए तो आपका वाटर एंटर नहीं कर सकता है. बट अगर मैं वेट इनटेक की बात करूं तो वेट इनटेक में हमने कोई गेट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं. देखो एक्सटीरियर वॉल्स में ये सिंपली पोर्ट है. तो कहने की बात है कि ये हमेशा आपका जो चैम्बर है ये हमेशा क्या रहेगा, इट इज फिल्ड अप ऑफ विद वाटर. ये हमेशा वाटर से फिल्ड रहेगा. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर सेइंग दिस वेट एंड दिस इज द ड्राई. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द रिजर्वायर इनटेक स्ट्रक्चर. ओके, सो अभी तक हमने दो कैटेगरी देख ली है. दिस इज योर थर्ड कैटेगरी. सो दिस इज द रिजर्वायर इनटेक स्ट्रक्चर. सो द एक्चुअल पिक्चर आई कैन शो हियर. ये आपका रिजर्वायर है. ये रिजर्वायर के ऊपर में देखिए जो कॉलम्स दिए हुए हैं, इसी में आपके इनटेक स्ट्रक्चर है. एक्चुअल में ये पंपिंग वगैरह सब इसमें अलॉट किया गया है. दिस इज योर कंट्रोल रूम. ओके, व्हेन द फ्लो इन द रिवर इज नॉट गेट guaranteed throughout the year, a dam is constructed. हम डैम प्रोवाइड करते क्यों हैं? थ्रू आउट अगर आपको फ्लोइंग वाटर नहीं मिलता है तो उस फ्लोइंग वाटर को हम लोग कहीं तो भी स्टोर करके रखते हैं. दैट स्टोर्ड वाटर इज नोन एज योर रिजर्वायर. रिजर्वायर वाटर. ओके, जो रिजर्वायर वाटर को स्टोर करेंगे ऐसे इसको हम बोलेंगे आपका रिजर्वायर. ओके, सो व्हेन द फ्लो इन द रिवर इज नॉट गेट guaranteed throughout the year, a dam is constructed across it to store water in the reservoir to form. तो हमने एक रिजर्वायर बनाया. The reservoir intakes are practically similar to the river intake. Practically similar to the river intake, except that these are located near the upstream face of the dam where maximum depth of water is available. हमें ये वहीं बनाना चाहिए जहां पे आपको मैक्सिमम डेप्थ मिलेगा. मैक्सिमम डेप्थ आपको कहाँ मिलेगा? Always you will get in the upper stream. Okay, the access to an intake is provided through a footbridge. The access to an intake is provided through a footbridge. आपका यहाँ footbridge provide करना पड़ेगा जिससे आपको easily accessible हो पाएगा. The water level will be the same as the reservoir level. जैसे आपका रिजर्वायर का लेवल होगा वैसे ही आपका वाटर लेवल भी इसमें सेम रहेगा. Now if you see this diagram, this upper diagram, so you can see this is wall room, or you can say this is your operating room. Now this is window, as you can see in this diagram as well, in this figure as well. This is window. Okay, this is backside door.
Then this is the footbridge. The backside will, here in the backside there will be a footbridge. Now, if you see this, so these are three different pipes. Okay, this is intake well. This is intake well, completely intake well. Now you see this is the intake pipe, pipe 1, pipe 2 and pipe 3. से सपोज अगर ऐसा अगर हुआ कि वाटर लेवल बहुत हाई है, तो हम क्या करेंगे, ये दो जो गेट्स हैं इन दोनों गेट्स को हम लोग क्लोज कर देंगे एंड वाटर विल बी गेट इंसर्टेड बाय दिस इनटेक पाइप. ओके, सपोज दैट कि हमारा जो डैम का वाटर लेवल है इस पाइप के नीचे में आ गया. सो व्हाट विल हैपन, in that case this will close as well as this will close, this will be open. अगर ये ऐसा रहेगा तो क्या होगा कि पानी आपका जो है वाटर रिजर्वायर वाटर जो रहेगा वो आपके इसी के में से आपका एंटर करेगा. सपोज दैट कि हमारा जो वाटर लेवल है और भी नीचे आ गया, हमारा मतलब बारिश नहीं हुई और आपको पानी कलेक्ट नहीं हो पाया प्रेसिपिटेशन के कारण. सो व्हाट विल हैपन, इट मे बी a high chance that a water level will be in the lower side. So in that case you have to close this chamber as well as you have to close this chamber. You have to just open this one and in from this the water can insert and can come inside and then it goes to the water treatment plant. So it's a very simple one. So for operating of this valve, you can see this is the outlet valve, so you can handle this valve from here only in from the rooms. Okay, so where it generally stabilize, it is just stabilize near to the your dam wall. Okay, in upper side. Okay, you can see a dam. So like this is working on. Okay, so next is a canal intake structure. The same structure is provided. I'm sorry. This is a wrong diagram here. I provided the wrong diagram. Just give me 2 minutes. I will show you what is a canal structure. So this is a canal intake structure. Yeah, this is good. So this is a canal intake structure where it will be near to the canal. Now again, if you see this complete system will be known as a intake structure. So again you can see here it is a control room. You can see this is a valve operating mechanism which will be attached to this. This is your conduct pipe. Okay, it is a pipe is laid on this concrete support. This is your concrete support. Then this is your water level. This is FSL. This is minimum. Okay, so flow canal. So what will happen? The water will get insert from this. The water will get insert from this. Now this is filled with the water, and then a screen is provided over here. A fine screen is provided to avoid the debris and the floating particles. The water will get inserted from this, and then this will go to the water treatment plant. So again, this is a very simple form of very simple form of intake structures. Okay, in canal intake structure, the intake well is generally located in the bank of the canal, and water enters the chamber through the inlet pipe. The inlet pipe is covered with a fine screen, as I have shown there. The top of the screen is generally provided at a minimum water level in the canal, and the bottom is about a 0.15 meter above the canal bed
to avoid the entry of a bed load. Bed load यानी मीनिंग क्या होता है, आपका डेब्रीज होना या आपका वेजिटेशन होना या जो भी मडी पार्ट होगा वो होना, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ बेड लोड. The inlet end is of a bell mouth shape with a performance of a fine skin on its surface. The flow velocity through outlet is generally 1.5 meter per second. This is the flow velocity of outlet is generally 1.5 meter per second, and this help in determining the area and diameter at the withdrawal pipe. The area of a coarser screen is designed by limiting the flow velocity to as low as zero point 0.5 meter per second. Okay, so kindly note this few points. This is level in the canal or bottom is about a 0.15 meter. Second, the flow velocity through outlet is generally 1.5 meter per second. And third is the area of the core screen is designed by limiting the flow velocity to as low as 0.15 meter per second. The flow velocity through a bell mount is limited to about zero point 0.3. Okay, so this is a lake intake structure. Lake intake structure is a very small structure, as we have seen in export structure as well. Generally submerged and exposed structure intake structure. So generally submerged intakes are preferred for a lake intakes. These are constructed as cribs or a bell mounts. The cribs are made up of heavy timber framework, which is a partially or a wholly filled with a riprap to protect the intake conduit against the damage by air walls. The top of the crib is covered with a cast iron or a mesh grating. सिंपल सा है, उसमें एक बस पंप लगा रहेगा और वहां से वो पानी को ट्रैवल करता रहेगा दूसरे एरिया में. ओके, सो द लास्ट वन इज अ रिवर इनटेक स्ट्रक्चर. So in this river intake structure, where it will be located? It will be located near bank of the river. Okay, so this is the good picture which I get from the Google. This is a river intake structure. It is a type of intake which may either located sufficient inside the river so that demand of water are met with in all season of the year. Why we are saying it should be sufficient inside? Because what is happening कि आपका जो रिवर का है, अगर प्रेसिपिटेशन कम होगा तो देयर विल बी हाई चांस कि आपका रिवर में जो वाटर फ्लो है वो कम होगा. एंड what the situation we are facing of today in India, like every river is sinking by its volume. Okay, so somehow somewhere floods comes, the volume get increased. So there is uncertainty in volume of the water. Sometimes it sinks and sometimes it expands. What I get, a volume getting expands. So that's why it should be sufficient inside कि अगर आपका पानी उस दिन नहीं, उस साल नहीं भी हुआ, अगर कम से कम हुआ तो भी आपको रिवर से वाटर को मतलब you can take water from the river in those days as well. Okay, or they may be located near the river bank where a sufficient depth of water is available. या आप ऐसी जगह पे प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे डेप्थ काफी अच्छा होगा आपके रिवर में. Sometimes an approach canal is constructed and a water is led to a intake tower. Sometimes an approach canal is constructed and a water is led to the intake tower. Okay, if the water level in the river is low, weir may be constructed. अगर आपका water level काफी नीचे आ गया तो आप एक छोटा सा weir बना सकते हैं, construct कर सकते हैं across it to raise the water level and divert it to the intake tower. आप इस रिवर के कहीं तो भी सामने में आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा डैम आप बना सकते हो. इन हिंदी नॉर्मली वी यूज टू से बंदारा उसका एक नाम है. So we can construct that small dam, small weir, and we can divert that water towards this intake structure so that कि आपका जो requirement है water का वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए. Okay, a small video here I'm having. Just tell you how it works. Now, if you see this diagram, this is a small video. Are you able to see this? This is a wall regulators over here. This is a pump over here. Then fine skin is provided. Then suction. This is your suction pipe, and this is your sump well. So this is your river intake. Okay, this is your river intake.
When a high flood level will be there, what will happen? When low flood level will be there, what will happen? Okay, so for that we are providing two different wells. These are known as two different. These are the wells. Okay, in some river intake, it may be of a single well, or in we are trying to make it now twin well. So we'll say a single well if only one pipe is provided. We say it's a twin well when two pipe is provided. Okay, what is happening with the twin pipe? Just will go with this. Suppose that this is your water level and it is a field of water, then you can see water is, if it is in a higher flood level, then water is coming over here. Okay, can you see the water level is over here? Okay, now you can see the water level get rises as well over here. Now what happen if lower flood level will be there, then what will happen? In that case, this will be locked and the water will come through this. Okay, so like that this twin well is worked. Okay, so this is all about your intake structure. So this is all about for today's lecture. We have covered if you see the syllabus, we have covered the what are the water resources. We have seen the water supply system and distribution of the water. Then we have seen the type of intake structure. Only one topic is left, that is a water demand. In next lecture, we'll cover this topic and we'll wind up this module. It requires only 3 lectures, and also we have already taken 3 lectures. Okay, in next lecture